Hello, my dear little friends. Welcome back to my channel. Warm greetings to you all. Let us begin with today's video with short and beautiful prayer. Read this prayer in your mind and ask Lord's special blessings upon you and your family. So, my dear little friends, our today's video is of grammar, topic adverbs. Look at the following examples. The girl writes neatly. The children are playing outside. My friend came home yesterday. In this sentence, the action word or verb is writes. Let us now ask the question how to the verb. How does the girl write? And the answer is neatly. Therefore, neatly is the adverb in this sentence. Let's move ahead. In second sentence, the action word or verb is playing. Once again, let us now ask the question where to the verb. Where are the children playing? What is the answer? Right. The answer is outside. Therefore, outside is the adverb in this sentence. Now the third sentence. Help me to know which is the verb here. Correct. Came. So let's ask the question when to the verb. When did my friend come home? And answer is yesterday. So, yesterday is the adverb in this sentence. Thus, we can say an adverb is a word that tells us something more about the verb. It often answers the questions when, where and how. हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है. वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, जो क्रिया हम करते हैं, जो एक्शन हम कर रहे हैं उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. अभी इसी वर्ब के बारे में जो दूसरा शब्द सेंटेंस में होता है जो हमें वर्ब के बारे में दे या और इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं. सो सिंपल वे टू फाइंड आउट एडवर्ब फ्रॉम द सेंटेंस वी कैन आस्क क्वेश्चन व्हेन, वेयर एंड हाउ. व्हेन, वेयर एंड हाउ इन तीन क्वेश्चन फॉर्म से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो मोस्टली एडवर्ब होता है. और सबसे इजी ट्रिक ये होती है कि एडवर्ब मोस्टली ly से एंड होता है. तो अगर सेंटेंस में कोई भी शब्द ly से एंड हो रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि यही एडवर्ब रहेगा. कुछ एडवर्ब्स इस तरह से नहीं होते हैं. वो आउटसाइड, एस्टरडे, टुमारो ये शब्द भी एडवर्ब हो सकते हैं. सो लेट अस मूव अहेड एंड लर्न मोर अबाउट इट विथ अदर एग्जाम्पल्स. द चाइल्ड इज प्लेइंग क्वाइटली. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. वी विल मीट टुमारो. द स्नेल मूव्स स्लोली. Now here let us begin with first sentence. The child is playing quietly. How is the child playing? Quietly. चुपचाप से बच्चा खेल रहा है. So here quietly it's the answer we have got and that is adverb. Then second trick is see quietly is ending with ly. So what answer we have found, it's the correct adverb. The sun is shining brightly. How the sun is shining? Answer is brightly. Again here brightly is ending with ly. We will meet tomorrow. When will we meet? हम कब मिलेंगे? तो आंसर हमें यहाँ मिल रहा है tomorrow, कल मिलेंगे. So here tomorrow is the adverb. Why tomorrow is the adverb? Because meet, मिलेंगे, ये verb है. तो कब मिलने वाले हैं हम? कल मिलने वाले. तो वर्ब मीट के बारे में हमें
मोर इन्फॉर्मेशन या अधिक जानकारी ये शब्द टुमारो दे रहा है. सो टुमारो इज अ एडवर्ब. एंड द लास्ट, द स्नेल मूव्स स्लोली. हाउ डज द स्नेल मूव? Answer is slowly. Again here slowly is ending with ly, and so this is the correct adverb. I hope my dear little friends you must have understood this topic. Kindly check your description box for your assignment. Thanks for watching. Do not forget to like, share and subscribe. Stay blessed, stay happy. Chaps.